some breaking news from the national capital. Amid clashes over Aurangzeb tomb in Nagpur, we are getting some news from Delhi, where Akbar Road signage board was defaced. Maharana Pratap's photo was put up, and just days after capital defacements, Akbar Road signage board has been blackened. Defaced signage board restored by the NDMC. We are showing you the visuals of the Akbar Road signage board, which was blackened and defaced, and Maharana Pratap photos were put up on it. But now the latest update that is coming in is that the defaced signage board has been restored by the NDMC. Signboard mentioning the name of Akbar Road that also in fact indicates the route to Akbar Road has been painted black. There were three, in fact the name was written in three to four different languages, but all of them have been painted black. Not just that, but two posters have also been pasted of Maharana Pratap, on which it's written Adamya Ajivit Ajivan Swatantra Maharana Pratap Jayanti Nimitt Sarvanna Hardik Shubhecha. So these are the two posters that have been pasted on this particular signboard, and not just here on my left hand side but on my right hand side as well. The similar kind of posters have been pasted on this particular signboard. The same sign, it was written in four different languages, but the individuals in fact who have painted these names black and have pasted the pictures of Maharana Pratap, they mentioned themselves as Sanatanis, and in fact they also gave a reference and the reasons as to why they have done this. They mentioned that there was an incident of vandalization of the statue of Maharana Pratap near ISBT, so perhaps that is why they have done this. Now we'll have to see that what action will be taken by the authorities and who were those individuals who in fact pasted these posters and have painted this particular signboard with black. There's also in fact expected that politics could erupt after this entire incident here which has taken place in the national capital. दिल्ली की सड़कें जो मुगल शासकों के नाम पर हैं, उसको बदलने की कवायद काफी ज्यादा तेज हो गई है। कुछ रोज पहले की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के कुछ सड़कों पर उसके साइन बोर्ड पर उस पे कालिक पोती गई, उसके नाम बदलने की बात कही गई। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि अकबर रोड पर यहाँ पर कल रात कुछ उपद्रवियों द्वारा यहाँ पर कालिक पोता गया और महाराणा प्रताप की तस्वीरें लगाई गई। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तस्वीरें तो हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली की जो सड़कें हैं उनके नाम बदले जाए। जो अकबर रोड हो, चाहे शाहजहां रोड हो, लोधी रोड हो, उसके नाम बदल दिया जाए। पहले भी यहाँ पर अगर बात करें तो 2 हफ्ते पहले इसी साइन बोर्ड पर कालिक पोता गया था और हिंदू रक्षा दल और गौ रक्षा दल ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन देश भर में इसका जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में भी जो हिंसा हुई है वो इसी को हुई है कि शिवाजी बनाम औरंगजेब। तो लगातार मुगल शासकों के नाम को लेकर विवाद जो है वो चल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी अगर बात करें तो वीएचपी यहाँ तक कह रही है कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसकी तस्वीरें क्या होती हैं, लेकिन लगातार जो विवाद है और नाम बदलने की कवायद है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है।